welcome to you to today's sessions of Basics of Contract Drafting. We are so glad you could join us. Get comfortable. We are about to begin. Let me ask you something. We spend years in law school reading cases, learning sections, and memorizing procedures. But when you step into practice, things look very different. So, what really matters? What skills help you beyond exams? And how do you prepare for the real world of law? That's what today's session is all about. Practical insights into contract drafting and how to grow from a student into a professional. This program is brought to you by the Collective Counsel. We work to connect legal education with practice through skill based learning, mentorship, career focused training. Our goal is simple to help law students and young lawyers gain practical skills and confidence for their careers. Now, it's my pleasure to introduce our speaker for today. Advocate Devin Bankar sir is a respected legal professional and contract specialist with expertise in commercial contract practice. His primary work involves negotiating and drafting commercial contracts as well as advising on handling data privacy mandates and has guided many young lawyers in building practical skills. On behalf of the Collective Council, we welcome you, sir. Over to you. Thank you, Ishita, for the introduction. Hello, everyone. I'm assuming all of you are students who want to pursue corporate law or at least are interested in corporate law. And it's great to have you all here. It's great to see a lot of students are interested in corporate law. And good evening, everyone. And truly, it's an evolving skill. It's a evolving area where the Indian, as we know that the GDP is growing and the landscape is changing. A lot of investments coming in, a lot of companies coming in here from outside. Uh, and it's a great, it's not the best time to be a corporate lawyer. And so the foundational what do you say, skill of every corporate lawyer is to know how to draft a contract. So this session, I'll just cover the basics of contract drafting, wherein I won't teach you how to draft a contract. I'll teach you how exactly and what things you should keep in mind to draft a contract. Because nowadays, you can, as you know, there are a lot of templates out there. The law firms or the in-house counsels, the companies who are going to work in the future will have their own templates. There are a lot of AIs who are now building templates for you. So it's really easy to draft a contract, but it's really difficult to finalize it as per our client's expectation. Uh, so contract drafting or drafting skill is in a form, I would say, is a storytelling skill. It's an art of telling a story of your own client. If you see a contract, if you see any contract, then you'll get to know that at the start you start with the business transaction the party is having. You go ahead and you add the commercial terms and the legal terms. So it's a flow. When you read the entire contract in once, it's like a 18-20 page contract. You'll understand that there is certain flow in that contract, and each side, both the parties in the contract are telling their side of a story. And that's why it's very important to learn that storytelling skill when it comes to drafting a contract. Okay, so first I'll start the why of drafting. हम क्यों कर रहे हैं? So I'll speak in English and Hindi both. You'll be comfortable. So start with why of drafting. पहली बात तो हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है? So the first and the most important rule of contract, a well drafted contract, is that it clarifies your own position. It clarifies your all each and every aspect of your client's expectation, what your client wants from the business. And it also explains the purpose or the promise that your client is putting ahead. Okay? So if you go ahead, I'll cover the drafting principle. What are the core principle of drafting a contract? Now these principles, if you keep in mind these principles, you will be able to draft a very specific contract for your client. The first and the most important principle is clarity and cleverness.
So shorter sentence, simple word, you avoid double negatives, you avoid layered cross referencing. Now what does this mean? Let's say if you want to if your client wants to retain an IP, your client wants to retain the IP in specific service. Now you put down that specific clause in a very crisp, short, and a legal language. You avoid putting complex language. You avoid putting complex terms which may implicate the drafting of contract. Now, second is the consistency. Now, if you open any contract, there is a section of defined terms. Okay. So for example, if you are defining a service somewhere in the contract, so you should make sure that that term is used consistently in the entire contract. You don't define service at one place, then you change the definition and define it elsewhere, let's say in at the end of the contract. Now that brings more ambiguity to the contract. So first, as we said, it should be clarity and cleverness. First is that you should be extremely short, simple. You should avoid double negative words. You should avoid in unnecessary cross-referencing. Second is consistency. So drafting key terms and whatever defined terms you are using in a contract, you make sure that you're using it throughout the contract. Now, second is the precision on your language. Now, in the world of contract, because the contract of course it relies on a business. ठीक है, contract क्यों बनता है पहली बात तो because there are two parties coming together and they are doing some sort of business. अब कैसा है ना, when one party is giving some services to other party, it's not very simple कि हम घर पे आके कोई तो गैस सिलेंडर या चेंज करके लगे. It's not that simple. When you look at a IT company like TCS for example, and let's say TCS is providing services to Wipro or TCS is providing services to some other US entity. ठीक है, तो बहुत कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन रहता है. ठीक है, और उस ट्रांजैक्शन में when you're defining your positions in the contract, you should be extremely precise in your language. क्योंकि एक टर्म बदलता है तो उसका मीनिंग चेंज होता है. Now when you will see a contract, there's a difference between the party shall and a party may. Because party shall मतलब क्या, उसका ऑब्लिगेशन बन जाता है, whether the party shall do it, and a party may do it मतलब उसका डिस्क्रिप्शन बन जाता है कि वो पार्टी के ऊपर है करना है कि नहीं. So the change in that one term will screw your position, client's position in a contract, and that's why you should be extremely precise when you draft a contract. The next principle is to avoid open-ended promises. So whenever you draft a contract, you should make sure that तुम्हारे contract में तुम्हारी party जो है वो open-ended promise नहीं कर रही है. If you have any questions, of course you can write it down. We will take a questionnaire at the end of the session. Yeah. So the next principle is to avoid open-ended promises या फिर open-ended language in a contract. For example, let's say हमारी party A है, so party A will support party B as needed. Now this is extremely vague. अब क्या पता पार्टी ए लिखा है कि पार्टी ए विल सपोर्ट पार्टी बी एज नीडेड, क्या पता मुझे वो सपोर्ट रात के 11 बजे चाहिए रहेगा. नो एम्प्लॉय ऑफ माइन इज गोइंग टू वर्क एट 11 o'clock or 12 o'clock इन द नाइट. ठीक है, तो यू शुड स्पेसिफिकली स्पेसिफाई कि पार्टी ए शैल प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज बिटवीन 9 AM to 6 PM ऑन बिजनेस डेज. और बिजनेस डेज को हम डिफाइन कैसे करेंगे, मंडे टू फ्राइडे. नाउ if you compare the first sentence and the second sentence is extremely precise. You are promising your client something which is well defined कि हम 9 से 6 के बीच में ही सपोर्ट सर्विस देंगे और वो भी मंडे टू फ्राइडे के बीच में ही देंगे. सैटरडे संडे वी वोंट प्रोवाइड यू एनी सर्विसेज, एज अपोज टू पार्टी ए विल सपोर्ट पार्टी बी एज नीडेड. इट्स एक्सट्रीमली बिग. सो द foremost principle of contract drafting is to avoid open-ended promises. And the most important thing is you align it with your business reality. So, the most important, what do you say? The most important task as a corporate lawyer is to first understand कि तुम्हारा client कौन है. Let's say your client is a IT company, your client is into SaaS, your client is a manufacturing entity, your client is into product, they make product. Let's say boat headphones company जो है, जैसे they make product, they are into research, they are into IT, they are into support services. So first is you should know your client, you should know your client's business, and the most important is you should know what your client wants from that specific transaction. So for example, you're a small, everyone assume that you're a corporate lawyer for a second and you're representing a small startup. ठीक है, अब वो small startup को TCS से order आता है.
Uh, if you want, I can share a note after this session. PPT is something which will have one or two words which you guys most probably will forget. So I'll share notes if you want after this session. I'll reach out to you separately. So yeah, so as I was saying that as a corporate lawyer, before drafting a contract, the foremost principle is to understand what your client wants from your from this transaction. So you should understand what your client does. तुम्हारा client IT में है, तुम्हारा client R&D में है, तुम्हारा client manufacturing में है. Second, you should understand your client's business. तुम्हारा client का business क्या है specifically. And third, yes, I'll provide some samples after this. And third is to understand कि तुम्हारा client का expectation क्या है इसमें से. Now I'll give you a small example of this. Let's say you're representing a small startup. और स्मॉल स्टार्टअप को टीसीएस से एक बिजनेस आता है, ठीक है, योर सर्विस प्रोवाइडर. लेट्स अज्यूम दैट योर सर्विसेज इज टू बिल्ड वेबसाइट. तुम्हारा क्लाइंट है, छोटा स्टार्टअप है उनका, एंड दे बिल्ड वेबसाइट एक्सट्रीमली वेल, एक्सट्रीमली गुड, दे हैव रियली गुड टीम. एंड टीसीएस अप्रोच देम, टीसीएस ने अप्रोच किया और बोला कि हमारी वेबसाइट हमको बदल के चाहिए, ठीक है. नाउ यू शुड नो कि यार ये सामने टीसीएस है एंड इट्स अ बिग बिग क्लाइंट फॉर आवर बिग बिग कस्टमर फॉर आवर क्लाइंट, ठीक है. सो इन दैट केस ऑफ कोर्स योर क्लाइंट वुड से कि यू डू नॉट स्ट्रेच इट, यू डू नॉट नेगोशिएट इट हार्ड, यू डू नॉट ड्राफ्ट अ वेरी कॉम्प्लेक्स अग्रीमेंट, कीप इट सिंपल, कीप इट बैलेंस्ड, बिकॉज ऐसा ना हो कि वो कॉन्ट्रैक्ट देख के टीसीएस भाग जाए. सो एज अपोज टू दिस, अगर कोई छोटा कस्टमर आता है तुम्हारे क्लाइंट के पास, ठीक है, तो यू नो दैट यू हैव दैट अपर हैंड टू ड्राफ्ट अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज इन फेवर ऑफ योर क्लाइंट rather than being balanced. So just by looking at that business, specific business के सामने काउंटर पार्टी कौन है, you draft your agreement according to that specific business requirement, and that gives you an edge over the other corporate lawyers. Now the second thing is business acumen. Of course, a lot of you guys have seen suits here, ठीक है. तो what was the one thing which that Harvey guy had apart from being really good at what he does? It was the business acumen. उसको पता था कि अगर मेरा क्लाइंट 10 तरह के सर्विस देता है तो वो उस स्पेसिफिक क्लाइंट के लिए कौन सा सर्विस दे रहा है और उस सर्विस के लिए उस क्लाइंट को क्या चाहिए. लेट्स से अगर एक फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक वन स्मॉल एग्जांपल. अगर मेरी वेबसाइट बिल्ड सर्विसेज वेयर आई बिल्ड वेबसाइट्स, ठीक है, आई बिल्ड वेबसाइट फॉर मल्टीपल क्लाइंट्स, ठीक है. तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरे क्लाइंट के लिए कौन कौन से क्लॉजेस, लीगल क्लॉजेस इंपॉर्टेंट है. लेट्स से आईपी हो गया, कॉन्फिडेंशियलिटी हो गया, वारंटीज हो गया. नाउ दीज आर द क्लॉजेस व्हिच आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर माय क्लाइंट. एज अपोज टू अगर मेरा क्लाइंट मैन्युफैक्चरिंग में जा रहा है, मेरा क्लाइंट मैन्युफैक्चर करता है कुछ प्रोडक्ट्स, सो आईपी मे नॉट बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज फॉर माय क्लाइंट, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग में आईपी बनता ही नहीं है. वहां पे वारंटीज, गारंटीज, रिटर्न ऑफ प्रोडक्ट विल बी मोर इंपॉर्टेंट. सो यू शुड अंडरस्टैंड फ्रॉम अ बिजनेस स्टैंड पॉइंट तुम्हारे क्लाइंट का सबसे इंपॉर्टेंट मार्क कौन सा है, ठीक है. Now I'll share one story with you about drafting a good contract, ठीक है, and why is it a great storyteller. So when you go to an arbitration, when the arbitration में जाते हो, now of course there are two parties and two parties are fighting on the same fact. एक पार्टी अपना स्टांस रखती है, दूसरा पार्टी अपना स्टांस रखती है. नाउ एज अ आर्बिट्रेटर जो वो मीडिएट कर रहा है डिस्प्यूट, whose whose party you will support और whose party you will be more inclined with, जिसका स्टोरी तुमको सबसे ज्यादा कन्विंसिंग लगेगा तुम उसके तरफ थोड़ा सा झुका करोगे अपना. सेम इज विद कॉर्पोरेट लॉयर्स. अ कॉर्पोरेट लॉयर व्हाइल ड्राफ्टिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इज बेसिकली ड्राफ्टिंग अ स्टोरी फॉर हिज क्लाइंट. वो पहले उसका बिजनेस टर्म लिखेगा, फिर उसकी लीगल क्लॉज लिखेगा, उसके बॉयलर प्लेट लिखेगा, उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन लिखेगा सर्विस का. सो इट्स एन एंटायर स्टोरी इफ यू रीड अ कॉन्ट्रैक्ट. So you should be extremely precise and extremely good storyteller to put down all the requirements which your client needs and be balanced about it. Okay? Now the next part. Now of course, this was about the practical aspect of drafting. Now I will shift to specific legal clauses which you should understand. तो मैं उन लीगल क्लॉजेस का एक ब्रीफ लूंगा आपके साथ, उनको ब्रीफली समझाऊंगा कि वो होते क्या है, एंड देन वी कैन स्टार्ट विद द क्वेश्चंस.
ठीक है. Now if you open any contract in front of you, that contract is divided into four parts. ठीक है. The first part is the recital part. Now in the recital part, uh, the entire business transaction is described in 4 or 5 lines. So in recital part, what it does is it basically describes who the service provider is, it basically describes who the service recipient is, and it describes क्या services service provider दे रहा है service recipient को. So taking our earlier example, अगर सर्विस प्रोवाइडर एक वेबसाइट डेवलप करता है, ठीक है. सो इन द रिसाइडल क्लॉज विच इज द, so yeah, I'll repeat myself. So contract drafting में whenever you are drafting a contract, the drafting of contract is divided into four parts. ठीक है. So the first part is the recital part. Now in that recital part, the entire business transaction is described कि दोनों पार्टीज के बीच में ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है. So if you read that, you understand कि कौन सा पार्टी क्या कर रहा है. So for example, पार्टी ए है, पार्टी ए का एक बिजनेस है टू बिल्ड वेबसाइट फॉर मल्टीपल कंपनीज. सो उसको टीसीएस ने अप्रोच किया एंड टीसीएस वांट्स टू बिल्ड वेबसाइट फॉर देमसेल्व्स. तो ये जो बिजनेस ट्रांजैक्शन मैंने समझाया अभी, दैट बिजनेस ट्रांजैक्शन विल बी कैप्चर्ड इन दैट रिसाइटल क्लॉज. ठीक है. नाउ सेकंड कम्स the business clause, which is the commercial terms. So of course when TCS is engaging that service provider, कुछ तो services रहेंगे, there will be description of service. So the first clause in most of the contracts is the scope of service, कि तुम services क्या दे रहे हो, specific service क्या दे रहे हो. So that services is described in that clause 1. ठीक है. Moving forward, of course if the service provider is providing a service, they are getting paid for it. तो payment terms क्या है. So scope of service and payment terms क्या है. So clause 1 will be scope of service, जहाँ पे the parties will describe what kind of services they are being provided. Second, what amount without samples and PPT are unable to learn anything. I'll share one notes with you. Of course, with PPT, I understand that there's no PPT, but PPT actually won't help you much. But I'll explain to you in a very simple examples. So the first clause is always scope of service, where whatever the services that are being provided are described in a very simple format. Second comes the payment terms. Of course, अगर तुम सर्विस प्रोवाइडर हो, तुम कुछ सर्विस दे रहे हो, तो यू आर गेटिंग पेड फॉर दैट सर्विस. तो पेमेंट टर्म्स क्या रहेंगे, व्हाट आर द पेमेंट टर्म्स, इट्स 30 days 45 days, कितना पेमेंट मिलना चाहिए मुझे, 5 लाख 10 लाख ऑफ द सर्विसेज, वो सारा पेमेंट टर्म्स इज डिस्क्राइब्ड इन द सेकंड क्लॉज. ठीक है. Now third comes the legal clauses, which are one of the most important clauses in a contract, and that's where as a corporate lawyer your job starts, drafting a good legal clauses. The first clause is the warranty clause. I'll just explain in brief what the warranty clause is. So let's say you go to an LG showroom. ठीक है. LG showroom में गए and you are buying a fridge there. So when you are buying a fridge, that person who is selling you the fridge, उसका एक line रहता है which mostly convinces you of buying a fridge or any electronics कि इसको 5 साल का 10 साल का वारंटी है. तो वारंटी मतलब क्या रहता है, इसका मतलब ये रहता है कि 5 साल तक 10 साल तक इस फ्रिज को कुछ नहीं होगा. अगर कुछ हुआ तो वी विल रिप्लेस इट और रिपेयर इट फॉर यू फ्री ऑफ कॉस्ट. And this is what warranty is. It's basically that whatever I am saying is true. अगर वो गलत निकला तो you have all the right for me to make it again, to perform it again and again until the time you are satisfied. So let's say अगर तुम फ्रिज लेने गए और उसका वारंटी 10 साल है, इसलिए आपको वारंटी कार्ड देता है, which is a written document in itself कि I am giving you a warranty कि 10 साल तक इस फ्रिज को कुछ नहीं होगा. So whenever the fridge is damaged, you can take that warranty card and say कि 10 साल तक वारंटी था, I don't want it. I want you to repair it again for free of cost. Similarly in a business contract, एक सर्विस प्रोवाइडर रहता है, जहाँ जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो क्या है, वेबसाइट डेवलपर है. सो वेबसाइट डेवलपर क्या बोलता है, मैंने जो वेबसाइट बनाई है इट वर्क्स परफेक्टली फाइन, अगर इसमें कुछ बग आता है तो आई विल परफॉर्म इट अगेन फॉर यू. So that's the warranty clause. Warranty is basically a statement जिसका which is found to be untrue. The service provider has to have some action to remedy it. ठीक है. Now the next clause is the indemnity clause. Again, indemnity तुमने सुना भी रहेगा, पढ़ा रहेगा. Yes, it's under legal clause. Warranty is a legal term. It comes under legal clause. So indemnity में, so again, indemnity is basically in a very simple term, compensation for, in warranty clause follows a time limit. No, there is no such time limit though. Of course, in manufacturing contract there are,
बट एज सच उसको डालना तो डाल सकते हो तुम, ऑफ कोर्स ड्राफ्टिंग और अ क्लाइंट रिक्वायरमेंट इफ यू वांट a warranty time. Of course, we'll take questions at the end. So, in indemnity, so indemnity, in a very simple sense, is a compensation for loss that has been the compensation for the loss that has been occurred to a party. So, अगर मेरी वजह से तुम किसी एक पार्टी को डैमेज हुआ, I will compensate that party, and that is what indemnity is. Now, indemnity is a legal obligation. Again, indemnity is a legal obligation, financial obligation as well, because compensation again, एक पार्टी को compensate करना मतलब उसका financial obligation है वो. So it's a financial obligation, and that's why it's one of the most important clause जो draft करते हो. You have to be extremely careful, and you have to be extremely specific कि तुमको क्या क्या indemnity चाहिए. So as a corporate lawyer, again, when I go back to the principles, the first principle is to be extremely simple, clever, and consistent. कि तुमको जो चाहिए वो simple words में you have to put it in the contract. Going ahead, the third legal clause is the intellectual property right. So IP right, again, IP right differs from business to business. As I said, you should know your client. You should know what your client is giving you. In this situation, अगर तुम्हारा client कुछ heavy IP बना रहा है, तो you should put adequate words, clever words to protect your client's IP rights. Then next comes the confidentiality. Now confidentiality मतलब क्या रहता है? Its simple term is to keep an information private. कि जो तुम्हारा इंफॉर्मेशन है वो अगर तुम किसी और को शेयर कर रहे हो तो अगले बंदे का ऑब्लिगेशन रहता है टू कीप इट कॉन्फिडेंशियल, टू कीप इट प्राइवेट. And that clause is again, you should be extremely specific of what you want, how how long you want that information to be secret, and that follows that same principle of being specific and clever. Then the fourth concept is a boilerplate clause. Okay, I will get all the questions at the end. So, in legal clause, I'll repeat myself. In legal clauses, there was first one was the warranty clause, second one was the indemnity clause, third one was the IP clause, and then there was confidentiality clause. Okay? Now comes the fourth part of the contract, the fourth and the last part of the contract, which is the boilerplate clauses. Now, boilerplate clauses are pretty standard in nature. Of course, there are not much negotiation that happens. And again, those are templatized, heavily templatized, and you can get those template from online as well. Yeah, I'll take some questions now if you want before going ahead. You can ask your questions by unmuting yourself. Sure. So last portion of a contract is a boilerplate clause. Boilerplate. So boilerplates are pretty standard in nature, and they are pre-written clauses, as you say. So they are pretty standard. Every contract has those, and it basically defines the procedure of a contract. तो notices कैसे जाएंगे, अगर कुछ change होता है तो change कैसे होगा, governing law क्या होगा, jurisdiction क्या होगा. So ये सब boilerplate में आता है, which is pretty standard. So if you have any questions, you can either write it down or you can speak. You can unmute yourself and you can speak. Sure, I'll share my PPT as Sir, well. Yeah, please, Ronak, please go ahead. sir, I got confused between this warranty clause and this indemnity clause because it Okay. might be certain difference Okay. between sound. Yeah. So see, representation and warranties are one. Of course, warranties are those statements. Warranties are a statement in which, let's say, तुमने अगर कुछ statement बोला कि I'll do this within 2 days. ठीक है? Now that's a statement. If it is untrue, then other party can sue you for breach of warranty because you have given that warranty. So in a way, warranty is like giving a guarantee that I'll do something. So warranty is, in a very simple terms, warranty is a statement or a guarantee that I will do something for you.
So when you say, let's say when you go to an LG का shop, ठीक है, व्हेन यू गो टू एन एलजी का शॉप, उस तब वो फ्रिज खरीदते हो आप या फिर एक टीवी खरीदते हो, तो वो क्या बोलता है कि सर इसके इसकी जो फ्रिज है उसका वारंटी 10 साल का है। इसका मतलब क्या है कि ये 10 साल तक अच्छे से चलेगा। अगर ये अच्छे से चला नहीं तो वी विल रिपेयर इट फॉर यू फ्री ऑफ कॉस्ट। So that's a statement that this will work for 10 years without any damages. This is a statement. It's a warranty. ठीक है? If it is false, of course, अगर कुछ हो जाता है तो you can always go back to the showroom and say कि आपने बोला था कि ये 10 साल चलेगा, ये 5वें साल में खराब हो गया, repair it for me. That's a warranty. Warranties are the statement to do something, और उसको अगर वो गलत साबित होता है तो you can go back to the other party and ask for certain remedies. Indemnity on the other hand is basically compensation that is being caused by one party to the other party. Compensation given by one party to the other party for any loss. So let's say आपने आपकी गाड़ी किसी अपने दोस्त को दे दी, ठीक है, वेरी सिंपल एग्जांपल, आपने आपकी गाड़ी किसी दोस्त को दे दी और वो दोस्त को बोला कि यू कैन गो टू मुंबई विद दिस कार, बट अगर कुछ गाड़ी को हो गया तो यू इंडेमनीफाई मी, अगर गाड़ी को कुछ डैमेज हो गया तो यू अग्री टू इंडेमनीफाई मी। इसका मतलब क्या है कि अगर गाड़ी को डैमेज हो गया ना तो यू कॉम्पनसेट मी फॉर द डैमेजेस, एज सिंपल एज दैट। सो इट इज इक्विवेलेंट टू इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कैसे काम करता है? इंश्योरेंस बोलता है कि ऑफ कोर्स आई विल गिव यू द नोट्स एज वेल, डोंट वरी, आई विल प्रोवाइड, आई विल गिव साक्षी एंड कलेक्टिव काउंसिल बेसिक नोट्स, you can refer those notes, I think she can share it with you. Yes, I'll share. Yeah. So indemnity क्या रहता है ना, indemnity मतलब अगर मेरी वजह से कुछ डैमेज हो गया किसी को या किसी का लॉस हो गया, आई विल कॉम्पनसेट फॉर द डैमेज। इट इज सिमिलर टू इंश्योरेंस, ठीक है। You want me to explain IP rights again? Okay. So IP क्या रहता है ना, अभी there is a thing called works made for hire, ठीक है। सो इफ आई एम हायरिंग समवन, आईपी में कैसा रहता है ना, जैसे मैं वेबसाइट डेवलप कर रहा हूँ टीसीएस के लिए, ठीक है। सो जब मैं वेबसाइट डेवलप करता हूँ देयर इज सम आईपी बीइंग क्रिएटेड एंड दैट आईपी इज वर्थ कॉपीराइट, क्योंकि मैं उसके पीछे का कोड, सॉफ्टवेयर कोड लिख रहा हूँ। बट क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर कोड टीसीएस के लिए लिख रहा हूँ, आई हैव टू हैव गिव दैट और असाइन दैट आईपी टू टीसीएस। तो वो जो आईपी क्लॉज रहता है, यू हैव टू ड्राफ्ट इट स्पेसिफिकली कि तुम्हारे क्लाइंट को चाहिए क्या। अगर तुम्हारे क्लाइंट को आईपी रिटेन करना है तो यू हैव टू पुट दैट, क्लाइंट बोलता है कि इसको आईपी दे दो, यू हैव टू गिव दैट आईपी टू द काउंटर पार्टी, ठीक है। तो वैसी लैंग्वेज तुमको आनी चाहिए। एक्सक्यूज मी सर। यस। हाँ जी सर, जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमें कैसे ऐड करना चाहिए, कंक्लूजन, और बीच में कौन सा पॉइंट कहाँ पे ऐड करना चाहिए हमें? ओके, सो देखो, जैसे मैंने बोला कि द कॉन्ट्रैक्ट कैसा रहता है ना, कॉन्ट्रैक्ट में तुम कुछ भी डालो, यू कैन पुट लीगल क्लॉजेस फर्स्ट एंड कमर्शियल क्लॉजेस लेटर, इट्स फाइन। बट एक स्टैंडर्ड फ्लो जो रहता है ना, जब आप कहानी पढ़ते हो, दैट्स व्हाई आई सेड इन द स्टार्ट कि कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग इज अ स्टोरी टेलिंग आर्ट। आपको कहानी कन्वे करनी आनी चाहिए आपकी। सो हाउ विल यू कन्वे अ स्टोरी? लेट्स से यू आर एक्सप्लेनिंग दैट कॉन्ट्रैक्ट टू अ 6-year-old किड। आप क्या करोगे? आप पहले उसको बिजनेस समझाओगे। सो इट ऑल स्टार्ट्स बाय एक्सप्लेनिंग व्हाट द बिजनेस बिटवीन द पार्टीज इज, तो उसको रिसाइटल में आता है, ठीक है। एंड देन सेकेंड कम्स द कमर्शियल टर्म्स, कि ठीक है बिजनेस समझा दे तुमने कि बिजनेस क्या है, बट उसके कमर्शियल्स क्या है, कि अच्छा पार्टी ए विल बिल्ड अ वेबसाइट फॉर टीसीएस, दैट्स अ स्कोप ऑफ सर्विस, ठीक है। सर्विस तो बता दी, लेकिन सर्विस के बदले पेमेंट क्या हो रहा है? क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी को सर्विस दे रहे हो तो ऑफकोर्स यू विल गेट पेड फॉर इट। तो पेमेंट कितना है? लेट्स से दे आर चार्जिंग 5 lakhs फॉर इट, लेट्स से दे आर चार्जिंग 10 lakhs फॉर इट। तो जो भी पेमेंट रहेगा उसका टर्म कितना है? 30 दिन है, 40 दिन है, 50 दिन है। सो ऑल दोज क्लॉजेस कम इन अ वे। सो कमर्शियल क्लॉज हो गया आपका, you explain the business, you explain commercial terms, then comes the legal terms. That's where a corporate lawyer's work is heavily dependent on. So in legal clauses, like I said, जो भी basics में समझाया उसको as a corporate lawyer तुमको एक simple clever words में डालना है। Now comes the very tricky part. Nowadays there are a lot of AIs which are doing this. Let's say you go to ChatGPT तो basic हो गया, लेकिन there are legal AIs which are coming up. If you go online and you put legal AI, there are Legora, there is August, there is Jurisphere, who are doing these things for you, ठीक है। या न्याय असिस्ट भी करके एक है, वेरी गुड विकास।
सो न्याय असेस करके भेजा. So these are the AI tools which are drafting contract for you. But कॉर्पोरेट लॉयर का स्किल कहाँ पे आता है? द होल पर्पस ऑफ दिस बेसिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग इज, आपने बोला कि आपको एक लेट्स से कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट या एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट चाहिए. फॉर एग्जांपल वेरी इजी, यू वांट टू ड्राफ्ट एन एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट. ठीक है, उसने एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट बना के तो दे दिया, लेकिन एज एन एम्प्लॉयर आपके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो उसमें आने चाहिए. एंड दैट्स वेयर कॉर्पोरेट लॉयर कम्स इन. एआई उसका 50% काम आज के टाइम पे कर देगा. वो क्या करेगा, वो सारे क्लॉजेस अच्छे से ड्राफ्ट करके देगा, उसकी इंग्लिश अच्छी रहेगी, उसका ड्राफ्टिंग स्किल अच्छा रहेगा, उसका लैंग्वेज फॉर्मेशन अच्छा रहेगा, सिंपल रहेगा, क्रिस्प रहेगा. बट जो तुम्हारे क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है वो डालने के लिए तुमको एक कॉर्पोरेट लॉयर चाहिए. एंड दैट्स व्हाट आई सेड, व्हेन यू गो बैक टू द प्रिंसिपल, जो आपको नोट शेयर करूंगा उसमें प्रिंसिपल्स लिखे रहेंगे. उस प्रिंसिपल का सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है? फर्स्ट इज टू बी वेरी क्रिस्प. यू शुड नो योर बिजनेस रिक्वायरमेंट, कि तुम्हारा बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या है. लेट्स से तुम्हारे क्लाइंट को चाहिए कि जो नोटिस पीरियड है वो 90 डेज का हो, या नोटिस पीरियड 60 डेज का हो. ठीक है, अब एआई ने ड्राफ्ट तो करके दे दिया, बट एआई ने नोटिस पीरियड 120 दिन का कर दिया. नाउ दैट्स अगेन अ कॉस्ट फॉर योर कंपनी, बिकॉज वो एक 4 महीने के लिए तुमको सैलरी देनी पड़ेगी. एंड नोटिस पीरियड नो वन वर्क्स एज यू नो. सो कंपनी के लिए कॉस्ट है वो. और कंपनी के लिए अगर नोटिस पीरियड 30 दिन का रहा तो कंपनी को अगर फिर हैंड ओवर तो मिलेगा नहीं 30 दिन में. So for company, an ideal notice period is 60 days. So as a corporate lawyer, your job is to ensure कि उसमें 60 days notice period लिखा हो. So this is where your drafting skills comes into play. Where 50-60% of that job is going to be done by AI. So contract drafting as a skill is going to be almost dead. But as a corporate lawyer, it's your job to ensure कि जो business requirement है उसको तुम अच्छे से समझो एंड उसको तुम लीगल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उस कॉन्ट्रैक्ट में डालो. Now, how it can be done is the portion we are going to start next. So the next thing, so double negative words कुछ नहीं रहता. Negative words are what do you say? So there are both things. There are affirmative words and there are negative words. जैसे तुमने बोला कि affirmative में I shall do it is an affirmative word. But negative words में these are the things which the client shall not do. तो उसमें क्या होता है ना, रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं बहुत सारी चीजें कि अच्छा इसके अलावा क्या होगा. सो लेट्स से आई शैल डू 10 पुशअप्स इज अ अफर्मेटिव वर्ड. बट डबल नेगेटिव वर्ड में आई शैल नॉट डू मोर देन 30 पुशअप्स. सो उसमें इट्स लिटिल कंफ्यूजिंग, इंटरप्रिटेशन वैल्यू, इंटरप्रिटेशन का झोल हो जाता है. सो सेकेंड थिंग इज how do you ensure that for my point was, once an AI drafts your contract, ठीक है, AI अभी जैसे मैंने बोला कि contract drafting is going to be dead in next 2 to 3 years. As a contract lawyer, first and the foremost thing is to understand कि तुम्हारे client का requirement क्या है, business का requirement क्या है. ठीक है, तो how do you assess that? How do you ensure कि तुम्हारे business requirement तुमने समझ लिए, उसको कन्वर्ट किया लीगल क्लॉजेस में और उसको कॉन्ट्रैक्ट में डालना है. हाउ डू यू डू दैट? फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू रीड अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट्स. नाउ यू कैन गो टू SEC करके एक वेबसाइट है, जस्ट पुट इट इन sec.gov.in. So this is the US government का stock exchange का website. So if you type any type of contract, let's say you type confidentiality agreement, master service agreement, कोई भी contract का नाम डालो और उसके आगे ये डाल दो, they'll give you a sample agreement मिल जाते हैं इसमें, जो कि live document है, जो कंपनी ने actually execute किए हुए documents है. First thing as a corporate lawyer is to read as much contract as you can. उससे क्या होता है ना, पहली बात तो तुमको उनका बिजनेस समझता है कि अच्छा पार्टीज का बिजनेस क्या है. सेकेंड, योर लैंग्वेज गेट्स रिफाइंड. और कॉर्पोरेट लॉयर का सबसे बड़ा खेल ये है लैंग्वेज. You lose a case, you lose a contract, or you lose a client when you use incorrect statements, when you use incorrect words, when your words are very vague, they're not clear. That's the moment you lose your client, because एक लाइन के मल्टीपल इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं if you are not clear. ठीक है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि स्टार्टिंग का जो स्टेटमेंट था मेरा कि पार्टी ए विल सपोर्ट पार्टी बी एज एंड व्हेन नीडेड. ठीक है, आई जस्ट टाइप दैट स्टेटमेंट आउट. पार्टी ए विल सपोर्ट पार्टी बी एज एंड व्हेन नीडेड. ठीक है, दिस इज स्टेटमेंट 1. पार्टी ए विल सपोर्ट
party B during between, I'll just type it out, 9 a.m. to 6 p.m. from Monday to Friday. Now you see the difference between these two statements which I have written in the messages. First statement, as a corporate lawyer, if you write this first sentence in an agreement, you are going to screw your client a lot, because कल party B आके क्या बोलेगा, Saturday को मुझे काम करके दो, because you have written it in the contract. It's very vague, it's very loose. That's when you, yeah, that's when you lose your client. That's when you lose a good business for your client. So as a corporate lawyer, first is to understand तुम्हारा client कितने बजे काम करता है. Of course, this is a very generic statement. ऐसा होता नहीं है contract में, but as an example I'm saying कि अच्छा अपना client ने बोला कि अरे हम सब सुबह काम करते हैं, so 9 a.m. to 6 p.m. and we only work during the weekday, standard weekday. As a lawyer, when you're writing, drafting a contract, you should be first understand the requirement. Second, you should know how to put it in contract. Now, how will you learn that contract drafting skill? First is to read through multiple contracts which are available online. आजकल बहुत सारे contracts है available online. Second is to use as much AI as you can. देखो, AI is built, of course, AI is going to be a blessing for this generation because it's going to do 50-60% of your 50-60% of our task. First is to read, Tanu, first thing is to read as many contracts as you can online. उससे क्या होगा ना, आपका लैंग्वेज जो रहता है ना, बोलने का लैंग्वेज, ड्राफ्ट करने का लैंग्वेज, ऑटोमेटिकली वो सही होता है. यू रीड सेम कॉन्ट्रैक्ट 100 टाइम्स एंड यू लिटरली लर्न दोज वर्ड्स, तुम्हारे दिमाग में बैठ जाते हैं वो वर्ड्स. So if someone tells you to draft a similar language, you can immediately draft it. Second is to use as much AI as you can. AI is a blessing in today's generation. So as a law firm, because I work in a law firm, we use multiple AI. Currently, we are using 3 AIs right now. There is Claude, there is Jurysphere, and there is August Karke. So we use 3 different AI. So what you can do is, as a law student, you can take a contract from online because it's available on public domain. You put it on ChatGPT or Claude, and then you can ask questions about, explain me warranty, explain me indemnity, explain me practical application of these clauses, explain me how I can draft it better, give me a simple interpretation of this language in very simple terms. So I'll put all these on chat box. And then there is thing called custom GPT. In chat GPT, there is a thing called custom GPT. And there is a lawyer's specific custom GPT created by some lawyer. I don't know who has created it. You can ask multiple contract drafting questions to that. You can ask them, draft me a simple contract, read through that contract and understand कि ऐसा क्यों लिखा है उन्होंने. ठीक है? So first, I'll put it here. First is to read contracts. You'll get contracts. Let's say you use AI, scc.gov.in. Second is to use AI. Sir, a question from me. Yeah. Sir, correct me if I'm wrong, but as far as I understood, IP rights are such a. For example, I created a website and provided the access to some specific company, but if the company provided to another party, then I can sue them. Is No. that This is a great question though. But see, when you are a service provider, here you're a service provider, you're building a website for someone else. So let's say I am that TCS company. I want a website. Anuradha, you are a service provider. You build website for other companies. Let's say I come to you and say कि keep this 10 lakh rupees and build a website for me. So तब क्या होता है ना, you irrevocably assign that IP in that website to TCS. अब TCS उसके साथ कुछ भी करे, वो उसकी मर्जी, because TCS has paid you that. अब फॉर एग्जाम्पल गाने का ले लो, ठीक है. एक जगह अरिजीत सिंह है और दूसरी जगह कोई प्रोडक्शन हाउस है, अजय देवगन. ठीक है ना. अजय देवगन क्या करता है, वो जाता है अरिजीत सिंह के पास, बोलता है कि मेरी एक मूवी आ रही है, दैट मूवी इज एक्शन बेस्ड एंड आई वांट यू टू राइट अ सॉन्ग which is similar, which is suitable for an action movie. Keep this 1 crore rupees and write me a song. जब अरिजीत सिंह गाना लिखता है ना, तो गाना कौन करता है, प्रोडक्शन हाउस, बिकॉज दे हैव पेड फॉर दैट स्पेसिफिक सॉन्ग. सो इसको हम लीगल लैंग्वेज में बोलते हैं वर्क्स मेड फॉर हायर. सो वर्क्स मेड फॉर हायर
is something which is again a different concept in IP. It will take a lot of time if you come to explain it. So this is about, yeah. And now you can ask me questions if you want. I am almost done. Then, are the IP rights for the one the service is provided for? Yes. So whatever services you're providing, uh, services you're providing, again that depends. But mostly when you're a service provider, तुम क्या करते हो, तुम क्योंकि तुम पैसे दे रहे हो उनसे, you assign that IP in that services. वो बोलते हो कि तुम, मैं TCS के लिए वेबसाइट बना के दूंगा, TCS will own it, but TCS should pay me for it. Then IP rights are Transferred to completely TCS. there. Yes, but it transferred to TCS now. So sec.govern.in cannot be opened. You type any contract name. Let's say you type confidentiality agreement, employment agreement, and then you write SEC. So then you can, then you will be able to see those formats. So as a service provider, I would not be able to use IP rights, but the ones who I have provided my service would be Yes. able to use it. They, Like they if own that services. Yes, they own that because you have okay, paid for it. Akhilesh has rightly said, because it's paid for it. You have paid for it. okay. Of course, you appoint a singer. Let's say, for example, well, for yourself. Let's say, or for your mom dad, for example, mom dad की anniversary है. So you go to Arijit saying कि Arijit, take this 25 lakhs and write me a song. So अरिजीत जब वो गाना लिखेगा 25 लाख लेके, वो तुम्हारे लिए लिखेगा. So you will be the owner of that song because yes, you have paid for it. So again, in the end, I would suggest one thing. First thing is to read. See, contract drafting, understanding contract is not rocket science. It can be, it's, sorry, dot in नहीं रहेगा, it's India, sorry. So contract drafting as a skill, it's not very hard. With AI is going to be very easy. पहले तो ठीक है, एटलीस्ट हमारे पास टेम्पलेट्स होते थे, हम उसको पढ़ते थे, बट अभी ये AI के साथ बहुत इजी हो गया है. Legal AI are very smart, and so what you can do is first is to read as much as you can. Read about businesses, different type of businesses कि क्या होते हैं वो. क्योंकि एज अ कॉर्पोरेट लॉयर जब आप कोई इन हाउस में जाओगे, कोई कंपनी में जाओगे, जैसे TCS में गए आप, अब TCS हमको पता है कि IT कंपनी है, बट इफ आई आस्क यू IT में क्या करता है, नो वन विल बी एबल टू आंसर इट. क्या TCS IT में करता क्या है, ठीक है. उसके बहुत सारे बिजनेस स्ट्रक्चर हो सकते हैं कि वो सपोर्ट दे रहा है, किसी को वो AI बना के दे रहा है, कहीं पे वो प्रोडक्ट कंपनी है. सो देयर आर मल्टीपल सेगमेंट्स इन TCS एज वेल. So you should go ahead and understand as much business as you can. Read about it. Chat GPT कर दो. The best teacher you can have is your AI. क्योंकि कैसा है ना, AI को तुम factual question पूछ सकते हो. AI is smart. AI is your hardworking dumb associate. It's very hardworking because it has a lot of knowledge पूरा इसका, but it doesn't have mind. तो आप वो कुछ भी फैक्चुअल पूछोगे कि मुझे इंडेमिनिटी का मीनिंग बता, मुझे वारंटी का मीनिंग बता, इट विल गिव यू. अगर आज दें फॉलो अप क्वेश्चन, इसको रियल वर्ल्ड में कैसे अप्लाई करते हैं, इट विल गिव यू दैट सिनेरियो. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कॉन्ट्रैक्ट एज मच एज यू कैन, ट्राई टू रीड एज मच एज यू कैन, एंड देयर इज वन बुक आई वुड सजेस्ट यू. आई जस्ट राइट इट. Practical guide to drafting commercial Sir, contract. hello. Yes. Sir, one question from my side. How Yes. are this representation, warranties, and indemnities are negotiated in real sense? ओके. सो नेगोशिएशन अगेन, जैसे मैंने बोला ना कि वारंट ऐसा कोई स्टैंडर्ड प्ले नहीं है कि अच्छा वारंट इसको इसी तरह नेगोशिएट करते हैं. ये कैसा रहता है ना, सबका बिजनेस अलग है. अब वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, या फिर लेट्स से देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज. वन इज अ होटल सर्विसेज, एक होटल में आप जा रहे हो, सर्विसेज दे रहे हो. सेकंड इज आप एक वेबसाइट डेवलप कर रहे हो. नाउ बिकॉज देयर आर टू डिफरेंट सर्विसेज, there are two different guarantees that have been provided. Can a hotel guarantee you कि आपको खाना पसंद ही आएगा? नहीं आएगा. But when you are developing a website और तुमको तुम्हारे काउंटर पार्टी ने एक रोड मैप दिया है कि मुझे ऐसा ही चाहिए, मुझे पीछे पिंक चाहिए और व्हाइट चाहिए नीचे, यू कैन गारंटी कि मैं वैसे बना के दूंगा. अगर क्लाइंट को पूरे वेबसाइट में 50% पिंक और 50 व्हाइट चाहिए, यू कैन गारंटी दैट कि मैं वैसा बना के दूंगा. बट इफ यू गो टू होटल, no one can guarantee whether you would like a food or not. So these are two different services, two different guarantees. So again, जैसे मैंने अब मैं I'll share you the notes. उस notes में
आप बस प्रिंसिपल वाला पार्ट पढ़ना, एंड दैट प्रिंसिपल, द foremost thing is to understand your business, the business requirement of your client. ठीक है, you would solve 20-25% of your problem. Yes, okay, again that's what I'm saying, two different conditions. So of course when you will go to a law firm, तुम एक क्लाइंट के लिए तो काम नहीं करोगे, you will have 15-20 clients working under you. You are working for 15-20 different clients. हर एक क्लाइंट का बिजनेस अलग है, हर एक क्लाइंट का रिक्वायरमेंट अलग है. कोई क्लाइंट बोलता है कि तुम बस स्पेसिफिक चीजें डालो, कोई क्लाइंट बोलता है कि यू गो एज हार्ड एज यू वांट बट यू प्रोटेक्ट मी एट ऑल कॉस्ट. एक क्लाइंट बोलता है कि यार मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम जो डालना डालो, बस गेट इट डन इन 2 days. So different client will have different expectations. You should understand your client's expectation and you should draft a contract according to that. Hello. Yes. Hello, sir. Could you please explain boilerplate laws again? Okay. Boilerplate clause are nothing. They are pretty standard. It basically defines the procedural part of contract. ठीक है. अब contract में procedure क्या रहता है? Let's say तुमको एक दूसरे के साथ communicate करना है. Let's say मैं एक वेबसाइट डेवलपर हूँ और एक TCS है. अब TCS को अब ऑफ कोर्स जब दोनों पार्टीज मिलेंगे तो दोनों पार्टीज के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहेंगे ना, एक दूसरे से जो बात करेंगे, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चेंज हो गया तो इन्फॉर्म करने के लिए किधर नोटिस भेजना है, किसको रीच आउट करना है, दैट नोटिस इज क्लॉज. सेकंड, तुम्हारा गवर्निंग लॉ, अग्रीमेंट में अगर कुछ डिस्प्यूट होता है तो कौन सा लॉ गवर्न करेगा, कौन सा जुरिस्डिक्शन में वो कोर्ट रहेगा जिसमें जाके तुम फाइल कर सकते हो. सो दीज आर प्रोसीजरल थिंग जो प्रीटी स्टैंडर्ड रहते हैं. अगर तुम अगेन बॉयलर प्लेट क्लॉज या फिर एक अग्रीमेंट डालोगे भी ना तो तुमको समझ आएगा कि these are all standard clauses which defines the procedure of a contract. कि notices हो गया, लॉ कौन सा रहेगा, गवर्निंग लॉ, देन जुरिस्डिक्शन कौन सा रहेगा, देन अगर तुमको ये कॉन्ट्रैक्ट के जो ऑब्लिगेशंस है वो किसी और को असाइन करने हैं तो वो कैसे होगा, कर सकते हो कि नहीं. जैसे मैं सब्सिडरी फॉर एग्जांपल, ठीक है, और तुमको एक कॉन्ट्रैक्ट खुद के पास नहीं रखना, सब्सिडरी को दे देना है. सो इसका मतलब क्या है कि आज से आई विल बी आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एंड माय सब्सिडरी विल प्रोवाइड सर्विसेज एंड मेक टेक द पेमेंट्स. सो फॉर दैट असाइनमेंट कर सकते हैं कि नहीं, स्टैंडर्ड क्लॉज. बट these are standard clauses which are especially at the end of the contract. So if you, again, as I said, if you read a lot, read, you will understand what how these clauses are drafted. Hello, sir. Yeah. Sir, you mentioned there was some customized GPT made by a few lawyers and advocates. Yeah. Could you please help us कि कहाँ से हमें वो मिल सकता है? Sure. Just a second. I'll just share my screen if you want. Just a second. Yes. So again, it's opening. Hello, sir. SCC में जो आपने साइट सर भेजी है ना, SCEC.in करके, तो where exactly do we need to go to get the draft of the contracts? Sorry sir, I didn't get you. मैं कह रहा हूँ सर, साइट पे exactly हमें कहाँ पे जाना होगा कॉन्ट्रैक्ट के वो जो ड्राफ्ट होंगे ना उनके लिए? हाँ, सुनिए, तो बेसिकली SEC ना स्टॉक एक्सचेंज, इट्स लाइक सेबी ऑफ यूएसए. सो सेबी पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेंगे, बट वो क्या करते हैं ना, जब कोई दो कंपनीज कोई अग्रीमेंट करते हैं जो बहुत बड़ा अग्रीमेंट है, इट्स अ वेरी ह्यूज ट्रांजैक्शन, दे हैव टू रिपोर्ट दैट ट्रांजैक्शन टू स्टॉक एक्सचेंज, सिमिलर टू सेबी. अगर दो इंडियन कंपनीज ट्रांजैक्शन करेगी तो सेबी को रिपोर्ट करना पड़ेगा. तो यूएस के स्टॉक एक्सचेंज क्या करते हैं ना, वो पब्लिश कर देते हैं अग्रीमेंट ऑनलाइन. So, sir, reading those agreements, won't it be like different from the Indian clauses and Indian law? No. For legal clauses will be 80-90% the same. Understanding is the same. So as I said, contract is divided into 4 parts. Recital will be the same because of the business transaction है, उसको तुम कैसे भी define करो. Commercial terms and legal terms. So legal terms में ना 80-90% of the legal terms are common all around the world. So warranties हो गया, indemnity हो गया, तुम्हारे IP हो गया, confidentiality हो गया. These are common terms which are worldwide. Okay, sir. So I'll just share my screen. I'll show you SSC as well. It's a very good. Just a second. Entire screen. Excuse me, sir. Yeah. So as a service receiver, if I'm not satisfied with the service, but there is not any clause related to this, then what can I do about it? Okay. Great question. That's where the job of a contract drafter, the corporate lawyer comes in. So as a service recipient, again, there's a standard clause where you have to re-perform the service.
You have to include a language to state कि भाई अगर मुझे सर्विसेज पसंद नहीं आई तो you reperform it until the time I am satisfied. सिंपल सी बात है. आप अगर गैस सिलेंडर वाले को फोन करते हो और उसको घर बुला के बोलते हो कि गैस मेरा चल नहीं रहा, ठीक करके दो उसको, वो ठीक करके जाता है. तो ऑफ कोर्स उसमें कॉन्ट्रैक्ट तो रहता नहीं है, लेकिन अनसेड रूल क्या है कि अगर ये वापस खराब हो गया तो मैं तो वापस कॉल करूंगा. सिंपल अनसेड रूल है ये. सिमिलरली इन अ बिगर transactions, business transactions, they make sure to put that line to state कि if a service recipient is not happy with the services, they will ask service provider to reperform the services. It's a standard clause and it's a standard practice. अब तुम सोचोगे कि यार सर्विस रिसिपिएंट बेफालतू का भी तो कर सकता है पंगे लेने के लिए, बट नहीं करते ऐसे, बिकॉज देयर इज अ रिलेशन बिटवीन टू पार्टीज. They don't want to mess up the relationship. So if there's a genuinely reason to reperform, they will of course reach out with objective what do you say, rationals. But of course बेफालतू का कोई करता नहीं है ऐसा कि बार बार जाके टोको कि मुझे सर्विस रिपरफॉर्म करके दे, रिपरफॉर्म करके दे. So this is a GPT. So where is it? Read. Just a second, guys. I'm searching it more. Maybe. Just give me a second, guys. Just a second, let me just find it. I'm not able to find it here. Maybe on the plus sign in the chat box, you can find it here maybe. The save customized ones. So you'll find that customized clause under your profile. Yeah, it's under profile, it says. Just click on your name, your profile would be opened. Yeah, that's what I'm doing. No, it's not here though. Customization. Check it on my phone though. You can just maybe Google it. I'm not able to find it. I'm sorry, but yeah, there are custom GPTs for lawyers. You can Google it. You'll find it. I'm not able to find it. I'm sorry. Sir, could you share it afterwards? Like when you Yeah, sure. I share use it it? afterwards if it's your. Perfect. Thank you so much, sir. If you could, sir, please provide one or maybe some samples of the Sure. contract. But at least I'll share my screen to show you how to find contracts and where to find contracts. Okay, can you see the screen? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So if you type, let's say, master service agreement, and you type SCC, okay, scc.gov. The moment you click this, you get to know this. This is the US Security Exchange of US. So if you go here, there are a lot of these master service agreement. All of them are different, more or less different. So you'll get to know a master service agreement between these two giants, which was signed in 2009.
So you go through the entire agreement. You can read. What you can do is you can take this agreement, put it on Chat GPT, and then you can tell Chat GPT questions. कि यार इसका business transaction क्या है? If you don't understand anything, you can ask Chat GPT कि अरे मुझे समझा इस specific clause का मतलब नहीं समझा इस agreement में, इसका मतलब समझा. Chat GPT can do that for you. So this is how you can learn the basics of this is where you can start at least understanding it. Also in the chat I have एक book का नाम दिया है मैंने. You can buy that book. It's from Bhupesh Verma. He's a very reputed corporate lawyer. मैंने भी इससे start किया था. I have a question. Yes. Sure. Sir, how can I become a corporate lawyer and build skills and portfolio related to US personal injury, paralegal and compliance related work? Okay. So personal injury is a very specific field. But portfolio बनाना है तो फिर what you can do is you can start reaching. पहले तो of course you would need that experience. You would need something to showcase कि okay you worked on US contracts. So you can tell them I had past clients or I was at least working in a law firm or a company which was in US. या फिर एक law firm India law firm थी लेकिन US के clients थे. So that way you can showcase your experience to build your portfolio. Of course they would ask for agreements, but again if they take your interview they would know कि what is it, how much have you worked, because US specific clauses रहते हैं कुछ US specific nitty-gritties रहते हैं, and you know those nitty-gritties only when you work on those agreements. So yeah, if anyone of you have any questions, you can I'll drop my email address and number. If you want, you can reach out to me for any questions. I'll also share one simple note on these basics of contract drafting, the principles of contract drafting. You should abide by those principles when you're drafting a contract. Of course, contract drafting कोई सिखा नहीं सकता because it's all come down to your understanding of legal knowledge, your drafting skills, your language, how you use that language. वो तो तुमको खुद ही सीखना पड़ेगा. But क्या क्या सीखना है, क्या क्या principles याद रखने हैं, and how you should improve your drafting skills is what I've taught in this class. So I'll drop my email address and phone number. If you want, you can reach out to me. Hi sir, can I ask something? Sure. Go ahead. Even though it's out of the topic, but I was having some doubts about the Judge Advocate General, the JAG. JAG. What do you think, like, about that? Like, your point of view on that? So JAG is a very specialized thing. It's basically you practice martial law. You practice laws which are applicable to army. There are like 15 lakh army personnel. तो उनकी cases रहते ही है. उन cases के लिए JAG is there. There is no written exam. I guess last time I checked, there is no written exam. It is directly interview, and like 40,000-50,000 people give interview, and only 5 or 6 are selected. So it's like that. SSCs लेता है उसको. So what are the eligibility for that? Like, sorry? What are the eligibility for that? There's no eligibility, I guess. Right now, I don't know because I graduated in 2023. So back in 2023, there was no eligibility. Once you complete law, you can enroll. You can give the interview. If you're selected, they'll take your next round, and you can go into JAG. Thank you. Yeah. So Abhay's question is, can you provide the way to find formats for contracts and other legal drafting? So see, देखो, basic तो जितना तुमको online मिलता है वो मिलता है. But when you go to a law firm or a company, उनके पास templates भर के रहते हैं. क्योंकि ड्राफ्टिंग रिलाइज ऑन टेम्पलेट्स हेवीली. अगर मुझे लेट्स से मैं आईटी कंपनी को सर्विस दे रहा हूँ, मेरे 50 क्लाइंट्स आईटी में ही है, आई वुड हैव टेम्पलेट फॉर देम, और मैं वही टेम्पलेट यूज करूंगा बार बार कोई और क्लाइंट आता है या उन्हीं क्लाइंट के लिए. सो मैं नया ड्राफ्ट का टेम्पलेट बनाऊंगा नहीं. सो टेम्पलेट्स आर देयर विद लॉ फर्म. इफ यू वांट टू लर्न, जैसे मैंने बोला कि अग्रीमेंट का नाम टाइप करो, आगे एससीसी टाइप करो, एंड यू वुड गेट दोस टेम्पलेट्स. टेक दैट टेम्पलेट, पुट इट इन एआई. And if you have any queries, you can ask that AI to answer your query. Of course, if you have any senior who can validate that answer, well and good, because AI specifically correct answer देगा कि नहीं, इसकी chances भी हो जाते हैं. कभी AI भी गलत answer दे देता है, as you know. But understanding perspective से आपको अगर कोई clause समझ नहीं आया या कोई legal clause समझ नहीं आया,
तो यू कैन ऑलवेज आस्क एआई कि उसका क्लॉज का मीनिंग क्या है, वो बराबर दे देगा। आदित्य का क्वेश्चन है ऑल्सो सर एवरी फर्म हैज देयर ओन ड्राफ्टिंग स्टाइल, हाउ शुड गो अबाउट इट एट इंटर्नशिप। इंटर्नशिप में टू बी ऑनेस्ट इंटर्नशिप आर ओनली फॉर टू चेक कि तुम्हारा ये है कि नहीं, मतलब कल्चर फिट है कि नहीं। नो, इंटर्नशिप में तुम मैक्स टू मैक्स रिसर्च करते हो, ड्राफ्टिंग उतना मिलता नहीं है, क्योंकि कैसा है ना, ड्राफ्टिंग और नेगोशिएशन का जो ट्रांजैक्शन पीरियड रहता है ना, वो 3 to 4 months 5 months रहता है। इंटर्न्स उतने टाइम तक रहते नहीं है, प्लस ऑफ कोर्स उनको उतना एक्सपोजर होता नहीं है, फुल टाइम नहीं रहने वाले। सो क्लाइंट जनरली डोंट गिव दैट वर्क टू इंटर्न्स, वो बस रिसर्च देते हैं और थोड़ा एडमिन काम देते हैं। सो डोंट रिलाई ऑन इंटर्नशिप इफ यू वांट टू लर्न रियल लाइफ कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग। On a scale of 1 to 10, how much would you rate contract drafting as a skill to land corporate job? With 0 or barely 2 or 3. Contract drafting as a skill is, again, like I said, is going to be dead because AI आने वाला है. So the corporate lawyer, जैसे मैंने बोला, understand business requirements, understand different type of businesses, attention for detail, तुम पढ़ पा रहे हो, your command over language, which you can improve by reading a lot. You can improve by reading a lot of language, क्योंकि तुम different type के agreement पढ़ते हो और तुम्हारे पास कोई आता है बोलता है कि यार मेरे को मुझे वारंटी का लैंग्वेज मिल नहीं रहा, यू सडन क्लिक होता है कि यार मैंने पढ़ा है कहीं पे तो आई कैन टाइप इट आउट। सो रीड, improve your language, be crisp and clear in contracts, जो मेरे नोट्स में रहेगा। So can you provide some like templates to practice contract drafting and other draftings? अगेन सो वही टेम्पलेट्स देके फायदा नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग मतलब वो फ्लो में सीख जाता है। ऐसा नहीं कि तुम जॉब लैंड करने के पहले सीख जाओगे सब कुछ, वो तुम जॉब करते करते ही सीख जाओगे। बाकी टेम्पलेट्स पढ़ पढ़ के तुमको आ जाएगा। कैसा रहता है ना, जब तुम्हारे पास कोई स्पेसिफिक टेम्पलेट रहता है ना, तुमको बस पार्टी का नाम चेंज करना है और पार्टी का कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट रहेगा वो डालना है और तुमको भेज देना। दैट्स ऑल कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग इज इन लॉ फर्म्स। सो तुम कभी भी स्क्रैच से कोई कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट नहीं करते। लॉ फर्म्स और कंपनीज के पास हमेशा टेम्पलेट्स रहते हैं, तो ऑनलाइन जाके यू कैन जस्ट रीड दोस टेम्पलेट्स। सर एक्चुअली आई आस्क समवन क्वेश्चन, जैसे बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट केसेज होते हैं, तो जैसे कि 1960 में बेरूबारी केसेज हुए हैं, अभी हाल ही में एक 2 जुलाई 2026 को एक केस आया जम्मू कश्मीर से, और बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड करके कोई थी, तो क्या हमें शुरू से जजमेंट केस पढ़ना चाहिए या अभी हाल से जो है 2026 2020 ऐसे पढ़ना चाहिए या 1960 से? क्योंकि जो लैंडमार्क जजमेंट केसेज होते हैं बहुत सारे बदलते रहते हैं, तो कैसे पढ़ना चाहिए मुझे? Again, for corporate lawyers, reading judgments are not that necessary. But yes, you can again you can refer to the most latest judgment. You can refer to the judgment जिसमें सबसे ज्यादा judges हो। So let's say 5 लोगों ने एक judgment दिया और उसके contrary 7 judge bench ने एक judgment दिया, तो 7 judge bench का judgment will be more prevalent than 5 judge bench. So there is no answer to this, to be honest. But yes, you should read judgments, but corporate lawyers in general doesn't have to read a lot of judgments. उतने judgment पढ़ने की जरूरत नहीं रहती इतने, because contract is little on commercial side. सर क्या एआई सबसे बेस्ट मतलब क्या केसेज हो सकता है पढ़ने के लिए? जैसे कोई जज वगैरह है या एडवोकेट किसी सेशन में जाता है, तो क्या वो एआई की मदद से क्या किसी केस को जीत सकता है? एआई क्या बेनिफिट है किसी लॉयर के लिए या लॉ स्टूडेंट के लिए? यस, वैसे मैं बोला ना कि स्पेसिफिक फॉर कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग एआई क्या करता है, बिकॉज एआई के पास क्या है, उसके पास एक तो नॉलेज है, पूरे इंटरनेट का नॉलेज है। सेकंड, उसके पास कमांड, इंग्लिश का कमांड है। इफ यू टाइप कि लेट्स से इफ यू टाइप तुम्हारा इंटेंट टाइप करोगे कि मुझे एक वारंटी का क्लॉज चाहिए जिसमें मुझे वारंटी चाहिए 10 साल की और उसको लीगल लैंग्वेज में चाहिए, तो एआई कैन ड्राफ्ट इट इजीली बिकॉज इट हैज बैकग्राउंड, इट हैज ऑल द एक्सेस टू ऑल द डॉक्यूमेंट्स इन द ऑन द इंटरनेट, तो वो लीगल लैंग्वेज में टाइप करके देता है। सो अगेन एआई, यू शुड मेक फ्रेंड्स विद एआई, यू शुड नो हाउ टू यूज एआई इन टुडेज एज एंड डेट, and it will not replace lawyer completely, but it will reduce the dependency. So lawyer in the end जो भी AI काम करेगा, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करेगा, उसको कॉर्पोरेट लॉयर को पढ़ना ही पड़ेगा एक बार, and that's where your skill comes into picture. जब तुम वो जो 70% AI काम करता है और 30% तुमको काम करना पड़ता है ना, वो 30% तुम कितना करेक्ट काम करते हो, कितना स्पेसिफिक काम करते हो क्लाइंट के लिए, that's what makes you stand out. But sir, sometimes AI hallucinate. That's in judgments, no? That's in judgments. So of course contract ड्राफ्ट में करता ही hallucinate,
तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना अगेन कि एआई का ड्राफ्ट फाइनल नहीं रहेगा कभी भी. इट कैन नॉट रिप्लेस अ लॉयर, इट विल जस्ट रिड्यूस द लॉयर के समझना पड़ेगा कि अरे मेरे क्लाइंट के रिक्वायरमेंट है कि नहीं, मेरे क्लाइंट के जो पोजीशंस है वो प्रोटेक्ट हो रहे कि नहीं, कोई ऐसा लैंग्वेज टू चेक अंडरस्टैंड, और उसके लिए चाहिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ दोस लीगल क्लॉज, जो कि आएगा इवेंचुअली आएगा. ऐसा नहीं है कि So, तुमको basically the prompts can help yes you out to yes give a proper result. yes If you yes are giving a wrong prompt or the prompts are not actually vague, then it will be converted at the same way. correct correct so absolutely correct Rahul. Prompting भी है lawyer of course prompting सबको आना, when you are using AI you should know how to prompt, of course वो कोई rocket science नहीं है, eventually तुम time के साथ सीख ही जाते हो. So the better you prompt, the more specific you are in your prompts, the better result you will get. तुम बोलोगे कि उसको कि अरे मेरा क्लाइंट का ये बिजनेस है, मेरे क्लाइंट का ये रिक्वायरमेंट है, स्पेसिफिकली सब कुछ चीजें डालोगे वो वैसा ही करेगा, बिकॉज एज आई सेड इट्स अ हार्ड वर्किंग डम एसोसिएट फॉर यू. इट्स हार्ड वर्किंग, तुमने उसको 100 चीजें दी तो 100 चीजें डालेगा, बट यू हैव टू हैंड होल्ड योर एआई कि मुझे ये स्पेसिफिक चीजें चाहिए. यस Sir, can you provide your AI prompts related to contract drafting, like how you draft contract, like what kind of prompt you give to AI? कुछ नहीं. सो बेसिकली जो तुमको चाहिए ना वो तुम सिंपली डाल दो. एआई इज वेरी स्मार्ट दैट वे. जो तुमने डाला है ना वो समझ जाएगा. अब जैसे मुझे चाहिए रहेगा कि मुझे वारंटी 10 साल की चाहिए और मुझे आईपी अपने पास रिटेन करना है, तो मैं डाल दूंगा माय क्लाइंट इज इन बिजनेस ऑफ डेवलपिंग वेबसाइट्स, आई वांट द वारंटी टू बी वेरी स्पेसिफिक एंड आई वांट टू रिटेन ऑल द आईपी राइट्स. इतना मैंने डाला ना तो वो प्रॉम्प्ट अच्छे से दे देगा, क्लॉज दे देगा अच्छे से. अगेन And यू sir, कैन one more thing, like how much data we will be keep on giving to AI. AI will understand basically the points. It will have the memory and it will be giving the yes particular result in the near future. So तो it's a वो kind of generative mode that यस is यस called वो generation. यस यस एब्सोल्युटली करेक्ट. सो वो ट्रेन होते रहेगा. एआई इज वो ट्रेन होते रहेगा, जितना डेटा आप उसको फीड करते जाओगे उतना वो ट्रेन होते रहेगा. सो दैट्स And व्हाई you, sir, व्हाट you absolutely, you said that it's a kind of custom and so it's a kind of baby. We yes treat it how we treat it, it will grow and eventually it will give you proper result in the future. correct true. So I think this is it. If you have any questions, I have given my contact details in the chat. I'll just ping it, just provide it once again. You can reach out to me if you want. Happy to help you out. And good to see that there are many corporate lawyers or students who want to be corporate lawyers. Yeah. Thank you so Thank much, you. sir, for this insightful session. Thank Thank you. you so much. Thank you so much for your time, guys. Chalo, have a nice day. Mm. Bye bye. As we wrap up, a big thank you to Advocate Bankar sir for sharing such valuable lessons with us today. Before you leave, please fill the feedback form shared in the chat. It helps us improve future sessions. Sure. And now, let's capture a quick group photo. Everyone, please turn on your cameras for a moment. We'll wait for 5 more seconds. Perfect. Thank you all for joining. We look forward to seeing you in the upcoming sessions. Have a wonderful evening and stay connected with the Collective Council. Goodbye. Thank you. Thank you.